Okay, this is a review class, and I'm again not using my mic. I think the computer's internal mic is pretty decent. You guys can understand me, and the recording is just goes is it's okay. It's not great, but still, I think it's understandable. So we are going to continue like this as long as I think as long as I'm not going to covering anything new. So we are going to go with this. So we are continuing with the previous lecture. In the previous lecture, I started from the basics and I showed how, if you want to enter some data, how you can enter the data by different ways. And slowly we built up from a single variable, and we went all the way to up to the arrays, and from arrays we went all the way up to the classes. Um, In a way, the strings will be covered today a little bit, not entirely. Uh, for the files, we can do that in a while as well. I don't think we are going to do it today, but we will do this in a while. Okay. In fact, since you are doing your what do you call it, your assignment, so that should cover the files automatically if you have been doing that. Uh, so I elaborated the entire, I spent up entire class explaining how that assignment worked or how you are supposed to do that assignment. So we have in a way covered that. Um, but if you want to get it covered, I think it will get covered in the coming lectures, but not today. Again, I'm going to start from a very basic uh, from okay, recursion, when not today but as the time comes, so we will do that. We still have time, so we can cover that in some in the future lecture. Okay, so in today's lecture, what we are going to do is we are going to make a simple game. Okay, a simple game, which is, you can call it a dungeon crawler. The people who normally play games, they know what I'm talking about. I'm talking about a dungeon crawler where you have to go through a dungeon and anything can happen while you're going through the dungeon. So that is the basic idea. And we are going to make all of that using text, our character arrays, and I'm going to explain like how we are going to do that. And once we have the basic idea, we will start coding how you can code and create something similar. Okay, so so if you get the hang of that, most likely you will be able to make games like chess, like draft, like snakes and ladders, or tic-tac-toe, Othello. Okay, any grid-based game, you will be able to do that. In fact, most of the games, they require a grid for you to play. No matter whether it's Mario, if it's some other game, all of them are working in a grid at the back end. Okay, to some extent. So we are going to do something similar, and now I'm going to explain to you how that can be accomplished. So. I'm going to open Paint, and I'm going to show you like what I mean when I say we are going to make something grid based. Okay. So whenever we are typing something, uh, so what the computer is doing, it's always allocating uh, some pixels in which you type those characters. Okay, so normally you don't see these lines, but there are lines over there. Like in a way they are separators which separate one text element with the other. So we have, whenever we're writing something, we are writing it something like this. So if you want to write, suppose Muhammad, so you will write M here, and then O will go here, and then H will go here, and then A will go here, and then another M. Let me type it like this: M, A, and D. Okay, so we write it something like this, and the text is
is written like this. Okay, so what we want to do is we want to use this information and generate our dungeon for us. Okay, so how the dungeon will be created? Uh, we are going to first of all make a design for that. So suppose we want to make a squarish dungeon. We are not limited to that, but for now we make a squarish dungeon. So you you divide the line into rows and columns, and whenever you type something, you type in the row, and then whenever you press enter, you go into the column. Okay, you move a column down. Okay, so you type in the columns, you move a row down. Okay, we have already done something similar in one of the exercises, and how we do this is we will make a plus sign. We'll put a plus line here. We will put a plus sign here. We will put a plus sign here. So you guys have done this, right? So if you have done this assignment number one by yourselves, you know what I'm doing. Okay. So we have plus signs over here. We put a hyphen here. ठीक है तो hyphen डालेंगे. So depending on what is going to be the length, we'll put that many hyphens over there. So in this case, it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are 8 columns over here. Okay, and we are not going to count this column. We are not also going to count this column. Okay, so there are 8 columns over here. The total number of columns is 10. This is 0. This is 9. And this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so these are the columns we are interested in, and now we will use the or sign and we will define the rows. So this is row number 1. This is again it gives me problems. So we are going, and this will define the number of like the height in a way. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again, we are not going to count this row. We are not going also not going to count this row, but we are going to count these rows. Okay. So this gives us the idea that we start from 0. We go all the way to the value n, which is in this case is 10. No, in this case it's 9. Sorry. So let me rub that out. So in this case, the value is 9. And or we can just call it n. And then you are only going to worry about the values between this, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. There's a question? There's no question. Okay. So this is what we are going to worry about. Okay, so whatever, so this is n minus 1, this location, this is 1. Okay, so and now in this case, if this is m, so then this location is m minus 1, and this is again 1. Okay, so we can this mouse is giving me a headache. So you can write something like this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, 7, 8. Okay.
So now we also know like this starts from 0 and it goes all the way to m. So m or n can be any values. Okay, so in this case, both of this is 9 and that is 9 as well. So this can be 8, this can be 7, this can be 6. By doing that, we decide on the minimum number. So in this case, let's suppose the minimum number is that the number of rows and column should not be less than 3. ठीक है, क्योंकि अगर कुछ एरिया चाहिए इसमें आप खेल सकें, अगर आप इतना एरिया नहीं देंगे ना तो फिर ये गेम प्लेबल नहीं होगी। हमने 1 by 1 का दे दिया तो यहाँ पे खत्म हो जाएगी 1 by 1। 2 by 2 का देंगे तो इधर खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो 3 by 3 देंगे तो वो इधर खत्म होगी। 4 by 4 देंगे तो वो इधर जाके खत्म। ठीक है, तो you have to define the minimum range of M and N where you can create a dungeon. Okay, you create a room. So what we're doing right now is creating a room, one room of the dungeon, but you can call that a dungeon as well, because normally what happens in these games, like a dungeon is normally connected to another room. One room is connected to another room through a pathway, and another room comes over here. So you define the another room over here as well, or below here or on top of that. We are not going to bother with that. We are only going to concentrate on this room and only this room. Okay. So maybe if in future you think that okay, this is interesting, I want to make the entire dungeon, so you can always take this code and use that to make it entire dungeon. Okay. अच्छा, अब dungeon के अंदर क्या क्या चीजें होंगी? Okay, so first of all, in the dungeon we will have a couple of walls, something like this, at different places. ठीक है, so okay, so we can make them pluses. Let's make them plus. Well, in my case, I'm use this wall, so I think using a plus will be a better thing, because that sort of shows like the wall is multi. This cannot be traversed from either side. Okay, अगर ऊपर से आते तभी traverse होगा, left or right से आते तभी traverse होगा, नीचे से आते तभी traverse होगा. So this dungeon will have a random number of walls. ठीक है. Here it will have a starting point. ठीक है, starting point में हम कहते हैं कि the player will start from the left side. तो ये हम अभी इसमें लिमिटेशन रख देते हैं. एक, the player will always start from the left side, but the player can start from any one of the rows on the left side. And similarly, the exit is going to be on the right side. So it is going to be on any one of the rows on the right side. ठीक है, तो हमें ये इनिशियलाइज करना होगा कि लेफ्ट साइड क्या है, और हमें वो इनिशियलाइज करना होगा कि एग्जिट कहाँ पर है. ठीक है, तो ये हमें इनिशियलाइज कर दें. एंड देन अब आप ये कर सकते हैं कि दिस इज एग्जिट, और मे बी आई शुड हैव मेड दिस एन एक्स. So let me make it an X. Is the rubber eraser. So X is where you exit. And then what you can do is you can say like, okay, they are random enemies in the maze, so they can be anywhere. And similarly, if you want to make it more exciting, you can say, okay, they are food items at different places. And normally the general idea is that you give a food item very close to the enemy. ठीक है, वो इसलिए ताकि because you are going to go into a fight very soon, so there's a chance that you have enough energy before you start the fight. Okay, तो ये अक्सर अक्सर ये गेम का वो है, गेम डिजाइन में आता है ये चीज़. ठीक है, क्योंकि आपकी हेल्थ कम है और पहले से और फिर एकदम से दूसरे एनिमी से लड़ने चले जाएं, तो you have a very good chance that you are going to lose. People hate losing. So गेम डिजाइन में खास बात ये है कि whenever you're doing game design, you put stuff in such a way कि
कि जो यूजर है उसके पास चांस हो, ही हैज अ फाइटिंग चांस, ठीक है, कि वो कर ले, ठीक है। अब इसकी जो क्वांटिटी है ये आपको यू यू कैन ओनली प्ले अगेन एंड अगेन, ओनली यू कैन, ओनली देन यू विल रियलाइज के ओके जो फूड क्वांटिटी है ये हमने सही रखी है, कम रखी है, ज्यादा रखी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा फूड डाल देंगे तो द गेम विल बिकम वेरी इजी, कम फूड डालेंगे द गेम विल बिकम वेरी हार्ड। तो इस तरह का आप उसकी बढ़ा सकते हैं, बट यू ओनली हैव टू प्ले इट अगेन, again and again, that is when you find out like what is the sweet spot। तो आपने फूड आइटम्स डाल दिया है, और आप ये भी कर सकते हैं कि लेट्स टू मेक दिस इवन मोर इंटरेस्टिंग यू कैन पुट वेपन्स इन डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, ताकि यू कैन चूज विच फ्रॉम विद व्हाट वेपन यू वांट टू प्ले, ठीक। तो इस तरह करके हम इस पूरे इंडियन को पॉपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर और भी ज़्यादा इसको इंटरेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप कहें कि दे आर ट्रैप्स एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, तो you can run into traps as well। तो ऐसा है कि आपने ग्रिड के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें डाल दी। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू गाइस कि व्हाट आई एम डूइंग। तो ये हम एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं कि डंजन कैसे बनेगा, ठीक। अब so what you can do is you can ask the computer to generate the entire dungeon by itself, so that's a good thing। One thing is that you design it yourself and then the computer will generate it exactly the way you want it, ठीक है। तो वो मैं अभी दिखाऊंगा हम कैसे करते हैं। The other way is that you ask the computer to generate it by itself, okay, so that is procedural generation, so what we are going to do today is a very uh, basic form of procedural generation, and all we are going to use are arrays and character arrays and uh, character, yeah, that's all what we are going to use, the character errors and some more logic, okay, that is what we are going to do. But I think in today's lecture we will not go beyond putting in the player and the exit. I don't think we will have time for creating all of it। तो अब अब कोई ये कह रहा होगा कि क्या सर गेम बनाना शुरू हो गए, ठीक है। बात ये गेम की नहीं है, बात की है कि इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग द स्ट्रिंग्स, ओके, आप इन कैरेक्टर्स को कैसे मैनेज करते हैं। So the games are very good tools by which you get problems like this, okay। आप एक प्रॉब्लम इस तरह की बनती है तो आपने देखा प्रॉब्लम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, okay? तो लैब छोड़े यही कर दें, लैब में आपको क्विज है छोड़ दें आप। तो इस तरह हम करते हैं। तो अगर हमें टाइम मिला तो हम इसमें एक बहुत बेसिक एआई भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप ये कर सकते हैं कि इन दिस गेम, देखिए व्हेन यू आर मेकिंग गेम आप कह देंगे एक तरह से यू आर द क्रिएटर, ठीक है। तो आपकी मर्जी आप किस तरह बनाना चाहते हैं। अब इसमें इस गेम में क्या होगा, हमारा जो प्लेयर है ही और शी विल मूव वन वन ग्रिड वन वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक। एनिमीज अपनी जगह पे स्टैटिक रहेंगे, दे विल नॉट मूव, but we can make this game in such a way that the enemies move themselves, okay। तो जो सबसे पुराना और सबसे जो पॉपुलर जिस तरह का डंजन क्रॉलर है, ठीक है, वो है आपका क्या है, ठीक है, सबसे पुराना आपका डंजन क्रॉलर यह है पैकमैन, ठीक है। गूगल में आप खेल सकते हैं इफ यू वांट टू, ठीक। तो दिस इज पैकमैन, ठीक है। तो ये लेकिन इसमें फर्क है कि इसमें डंजन आगे पास सेम है, आगे पास एआई जो है मूव करती है, इट कीप्स ऑन मूविंग, और ये एक स्मूथ है, ये स्मूथ मूवमेंट है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक। लेकिन इट वर्क्स ऑन द बेसिक द सेम प्रिंसिपल, ठीक। तो हम अभी सारी अभी गेम्स में टर्न बेस से स्टार्ट होती हैं, देन दे गो रियल टाइम। ये रियल टाइम का मतलब है कि रियल लाइक द टाइम एज इट्स गोइंग ऑन, दैट इज व्हेन यू आर वर्किंग, ठीक है। तो रियल टाइम होती है, एक टर्न बेस्ड स्ट्रेटजी होती है, रियल टाइम स्ट्रेटजी होती है। टर्न बेस्ड डंजन क्रॉलर होता है, रियल टाइम डंजन क्रॉलर होता है, ठीक। तो तो हम अभी इस तरह की एक चीज बना रहे हैं, ठीक है। वी आर वेरी बेसिक, हमारे पास कोई अच्छी ग्राफिक्स नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अच्छे ग्राफिक्स आ जाए तो वो दे आर ओनली रिप्लेसिंग इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट आपको यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट जगह के पास सिर्फ पिक्चर आ जाती है, तो इट जस्ट रिप्लेसेस व्हाट यू आर सीइंग, द बेसिक कॉन्सेप्ट स्टेज द सेम। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट इज द मेन थिंग,
ठीक, आपकी ग्राफिक्स आप इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर पीछे अंडरलाइंग गेम अगर सॉलिड नहीं होगी तो आपकी गेम फेल हो जाएगी। ठीक है, आई कोई भी एप्लीकेशन है, अंडरलाइंग उसका अगर जो अंडरलाइंग फिजिक्स है या अंडरलाइंग जो मैथ है या अंडरलाइंग जो कैलकुलेशन है वो सही नहीं होगी ना, तो इट डजंट मैटर हाउ गुड योर गेम लुक्स, इफ इट्स नॉट गिविंग यू व्हाट यू वांट, इट्स गोइंग टू फेल। तो हम इस बेसिक प्रिंसिपल पे चलेंगे। ठीक है, तो ये सारा इंट्रोडक्शन देने के बाद, ये मैं आपको इसलिए इंट्रोडक्शन दिया इतना लंबा क्योंकि इफ somebody was interested like how to make games, so they now have a very basic idea how to do that, and those people who are not interested in games, even they know like what kind of string activity or correct activity we need to do in order to solve this problem. Okay? So that is why we went this way. So now I'm going to create a new file. I'll save it, file save as. I'll call it text. गलत बना दी। लेट्स गो हियर, गलती करी। जावा टेक्स्ट इंजन, इसको बंद करते हैं। टेक्स्ट, लेट मी डिलीट दिस। डिलीट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई एम अ बिट लेजी, आपको बताऊंगा क्यों। फाइल सेव एज टेक्स्ट इंजन डॉट जावा, और यहाँ भी हम इसको जावा फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं जावा से। या मुझे मुझे ये नहीं लिखना पड़ेगा। दैट इज हाउ इजी। नाउ यू जस्ट टाइप इन मेन, ये पॉपअप किया, अब ये इसने मेन टाइप। नहीं जीटी कराची हम ना बनाए, बहुत बहुत मेहनत लगती है, इतना आसान नहीं है, इतना समझ रहे अगर आपने ऐसा ही कोई चीज बनानी है, लुक इनटू मॉडिफिकेशन। ठीक है, मॉडिफिकेशन जो होती है वो आपकी जो एक्चुअल गेम होती है ना उसको आप चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम मेकिंग एवरीथिंग, जस्ट चेंज द बेस गेम। So modifications are supported by GTA 5, so you can do it. वो जब करना शुरू है आपको अंदाजा होगा कितना काम लगता है, मेहनत का काम है। अच्छा, anyway, so we are in main, and now just to make sure that everything is fine, I always do this, and we say hi, and we just run this. ठीक है, अच्छा, तो ये this is working fine. अब बात आ जाती है कि how do we make the dungeon. So let me give you a basic idea. So we have plus, then we have minus, minus, minus. Okay, let's add another minus, and then we have a plus again. So that is the topmost wall. Then we have, so instead of this, we have this. And instead of minus, we have nothing. और इसको copy कर लेते हैं. And then we have this, then we have this, and we copy this and paste this. ठीक है, तो आपको dungeon इस तरह का है. So this is what we want to create. Now it's going to have some starting point. Let's suppose this is the starting point, and then it has some ending point, and suppose this is the ending point. ठीक है, तो अब ये P इन तीनों रोज में से कहीं भी हो सकता है, और E जो है इन तीनों रोज में से कहीं से भी हो सकता है. ठीक है, so now if you want to add some wall, a wall can be here and a wall can be here. तो इसका तो हमने सिर्फ दो वॉल्स रखी हैं, इसका मतलब ये है कि the P will not be able to move to the right. P will have to come down, and then it will have to decide whether it wants to go to right or below. Suppose it chooses right, it will go here, and then suppose it cannot go up, it can go down. Then suppose it chooses to move right again, he will go here. And then suppose he wants to move down, he will not be able to move down because of this. So he will move up, he will go there, then he will move right here, and then he cannot go further. So he will most likely come down, go left, or come down again, and this is where he will exit. Okay. So this is a basic dungeon. अब इसका बात है कि AI हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम दो तीन तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम रैंडम इसको दे दें। रैंडम ये है कि इट विल पिक एनी रैंडम साइड एंड इट विल जस्ट टर्न मूव देयर। तो अगर फर्स्ट के इधर है, इट चूजेस टू गो राइट, यहाँ पे वो इट विल ट्राई टू गो राइट, won't be able to do it, so it will stay here. Next turn, try to go someplace else. It will keep on trying until it finds an empty slot. So once it finds an empty slot, what it will do is it will delete p from here and it will write p here. ठीक है, तो ये हमें ऑपरेशन करना होगा। अभी फिर से रेंडमली अब इसके पास मूव करने की ज्यादा ऑप्शन है। फर्स्ट कहेंगे ये मूव करता है और इट चूजेस डाउन। ठीक है, तो रेंडमली चूज किया डाउन, तो यहाँ पे जो पी है गायब हो जाएगा, तो पी विल कम हियर, and then it can go up again and up again, or it can go up and right वगैरह। ठीक है, अब ऐसे में अगर आप रैंडम रखते हैं, ठीक है, इफ यू कीप इट रैंडम, तो काफी पॉसिबिलिटी है कि ये जिस ट्रैक पाथ से आया है उसी पाथ से वापस चला जाए। ठीक, इस चीज को अवॉइड करने के लिए जो आप काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, आप एआई डिफाइन करें जो कि सिर्फ राइट और बॉटम जाए। ठीक, तो वो क्या करे कि यहाँ पे उसने राइट ही कोशिश की, इट कुडंट गो राइट, सो इट विल कम डाउन, और अब डाउन आने के बाद it will go right again. So there is empty, it will come here, it will go right again, it will come here, it will go right again, it will come here, and then it will go right again, it will not be able to go right again, so it will choose to go down, come here, and it will exit. ये बहुत बेसिक इंटेलिजेंस चाहिए। बेसिक इंटेलिजेंस का मतलब it will always go right and wrong, because we are assuming that this is the farthest the exit is going to be from the player B. So it's most likely if you go right and down, I will most likely reach this point. जो इसमें प्रॉब्लम है वो ये कि E can be here as well. अगर ये होगा तो it will come down here, and now since it has exhausted every possibility, then it will go back. It will start to go up. ये तो इस चीज को तो ये जो छोटा सा आप एआई बना देंगे तो वो भी आपको इसकी लोकेशन तक पहुंचा देगा। Then there are other ways of doing this. There are different algorithms which you can create to reach the exit very quickly. उस तक अभी जब बात आई तो हम उसकी तब बात करेंगे। फिलहाल हमारे पास ये डेंजन है, हम इसको रन करते हैं। ठीक है, तो आपका इस तरह का डेंजन बन जाएगा। Now what we want to do is we want to ये जो है सिर्फ प्रिंट हो रहा है, ठीक है, it's not storing this dungeon anywhere, but we want to store this dungeon at some place. Okay, अब आप देखेंगे सारी जो है स्ट्रिंग वैल्यूज है। ठीक, हम इसको स्ट्रिंग में डिफाइन कर सकते हैं। the only problem is that string are immutable, which means the strings cannot be changed. तो एक दफा अगर हम dungeon डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग, आप उस dungeon को में चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग्स को नहीं इस्तेमाल करेंगे। व्हाट वी विल यूज आर कैरेक्टर एरेज। कैरेक्टर एरेज का फायदा ये होता है यू कैन इनपुट वैल्यू एंड आउटपुट द वैल्यू वेरी इजीली विद द कैरेक्टर एरे। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब वो करने से पहले हमने, आपको याद हो, हमने एन और एम डिफाइन किए थे, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो हम सबसे पहले वो डिफाइन करेंगे। सो इंट रोज, तो रोज के अभी हम अपनी आसानी के लिए हम वी गिव इट एनी नंबर। सो लेट्स सपोज वी गिव इट 6 and int columns, we give it any number, so suppose we give it an 8. Okay, तो ये 6 रोज होंगी, 1 2 3 4 5 6, और 8 कॉलम होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इतने बड़ा ना हमारा एक डंजन बनना चाहिए। अब इतना बड़ा हमारा एरे होगा। ऑब्वियसली 6 रोज का मतलब ये है कि पहली और आखिरी रो जो काउंट नहीं होगी, तो वी आर एक्चुअली वर्किंग विद 4 रोज। ठीक, ये ध्यान में रखनी है बात। So now we define a character array. So character array, and let's call it dungeon, which is equal to new character, and we give it rows, and then we give it columns. ठीक है, तो हमने अब करेक्टर एरे डिफाइन कर दिया जिसमें इतनी रोज होंगी और इतने कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो आई विल ऑलवेज कंट्रोल द रोज, जे विल ऑलवेज कंट्रोल द कॉलम्स। ठीक है, हमने एक डिफाइन कर। अब है कि हाउ आर वी गोइंग टू मेक द डंजन। ठीक, तो सबसे पहले तो ये है कि डंजन बनाते हुए a few things we know already. The plus signs, where they lie. The plus sign either lies at the 0 location or it lies at the n-1 location or m-1 location. ठीक है, तो 0, तो इसका मतलब है कि ये जो लोकेशन है दिस इज 0 0,
this is 0 n minus 1, this is 0 m minus 1, and this is n minus 1 and m minus 1. ठीक है, तो ये चार लोकेशन जहाँ पे आगे पास प्लस होगा. ठीक, तो ये चीज लिखने के लिए हम लिखेंगे कि डंजन की जो 0 0 लोकेशन है उसमें आप प्लस डाल दें. ठीक है, वी आर पुटिंग अ करेक्टर ओवर देयर. ठीक, अब हमें पता है कि डंजन 0 0 और 0 n माइनस 1 ये एक ही वैल्यू उसके अंदर आएगी. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, डंजन 0 and the column is row columns minus, we put it equal to plus. ठीक है, तो हमने ये डिफाइन कर दिया. ठीक, इसी तरह हम आगे मजीद लिख सकते हैं जिसमें हम ये चीज़ें डिफाइन करेंगे, लेकिन वो शायद शायद बीच बीच हो जाएगी तो हम उसको अगली लाइन में कर देते हैं. सो अगेन, so the row in this case is rows minus 1, and over here it's again rows minus 1 and columns minus 1. ठीक, तो हमने ये डिफाइन कर दिया. और सर माइनस 1 फिर बता दें आप. देखिए सिंपल सी बात है कि आपके पास 0 से स्टार्ट कर रहे हैं अगर आप, तो अगर आपके पास 10 रोज हैं तो आप 9 तक जाएंगे. ठीक है, सो इफ यू हैव डिफाइंड द रोज टू बी 10, so you will start from 0, you will go all the way to 9, so 10 minus 1 is 9, so that's why I'm using rows minus 1 and columns minus 1. ठीक है, ये तो इसलिए हम कर रहे हैं. Okay, so once we do this, ठीक है, हमें we want to see our dungeon if you're doing the right way. ठीक है, so मैं for loop बता देता हूँ. For int I is equal to 0, I is less than rows, and I plus plus, and for int j is equal to 0, j is less than columns, and j plus plus. ये हमने कर दिया, और हम यहाँ पे करेंगे कि system dot out dot print. I'm not using print ln क्योंकि मैं print ln करूँगा तो हर लाइन में print करके अगली लाइन में चला जाएगा. I'm just using print, and I'm going to print the current location in the table, so which in this case is I and j. ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट करेगा प्लस से. अब यहाँ पे हमारे भी स्पेसेस हैं. ठीक है, इनिशियली जब आपको एरे डिफाइन करते हैं उसमें आप वैल्यू नहीं डालेंगे तो नल वैल्यू उसके अंदर ऐड हो जाती है. ठीक है, तो इन दिस केस इट विल बी स्पेसेस, तो वो आगे पास आ जाएंगे. तो ये प्लस 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 4 प्लस आपको दिखाएगा. ठीक, मसला ये है कि वंस द रो इज डन, यू वंस द कंप्लीट रो इज डन, यू हैव टू मूव टू द न्यू लाइन, जो कि हम इधर नहीं कर रहे. तो इन ऑर्डर टू दैट आई विल राइट system dot out dot print ln, और बस ये लिखें. ठीक है, so once it prints one row, so because of this it will go to the next line, and this the outer loop will run again. Right? So if I've done this correctly, so we should be able to use see that ये देखिए आ गया आपके पास. ठीक है, प्लस 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 प्लस, तो हमारे पास एक बॉक्स अभी बनना शुरू हो गया. ठीक है, वी गेटिंग अ पिक्चर ऑफ अ बॉक्स, और ऊपर हमारी जो हमने अपने रेफरेंस के लिए जो बॉक्स बनाया था वही बन के आ रहा है हमारे तरफ. ठीक है, तो अब इसका फायदा ये है कि if you change, so suppose if you change the columns to suppose 20 and I run this, so the box is bigger. ठीक है, तो अब ये डायनामिक हो गया. ठीक है, दिस इज डायनामिक, so we can always get these values as random
and once we get these random values, so the size of the map will change. ठीक है, तो इस तरह मैप का जो साइज है वो बड़े सिंपली आप बड़े आराम से बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं. ठीक है, so in order to keep things manageable, we are keeping with a small size. और हमारे पास ये हो गया. ठीक, तो हमारे पास अब ये बन गया. अब हमने करना क्या था, हमें करना ये था कि we have to write hyphens here and we have to write the or symbol here. So ये हमें करना है. तो इसका मतलब ये है कि we need to run a for loop which puts hyphens in these locations, and then we need to run a for loop which puts uh, or values in these locations. ठीक है, तो ये हमें करना है. अब ये जो लोकेशन है ये 1 है. In this case the column is 1 but the row is 0. So 0 1, 0 2, 0 3, 0 4, 0 5, 0 6, 0 7, 0 8. ठीक है, तो हम we are going all the way to to 8. We are starting from 1 and we are going all the way to 8. ठीक है, तो ये करने के लिए अब हम for loop लिखते हैं. We write the for loop for int I is equal to 1. I is less than uh, rows minus 1 and I plus. In this case column are 8. हाँ तो 7 हो गया in this case. ठीक है, मैं 10 के हिसाब से बता रहा था. ठीक, तो आखिरी कॉलम 7 है तो 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 तक वो आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि 7 पे वो प्लस पड़ा हुआ है तो वी हैव टू गो टू 6, so that's why we're going to write rows minus 1. And we take the dungeon I, और I नहीं है ये, बल्कि dungeon ये तो J होगा. So that's, instead of I we make it J. J is equal to columns minus 1 J plus plus. I is 0 and dungeon J is going to change, and we put a hyphen there. So so columns अगर आगे 8 हैं, ठीक है, तो if we select 8 तो ये 7 तक चलेगा. ठीक, तो हमें चलाना है कि हमें 6 तक चलाना है if I'm not wrong. ठीक, तो इसलिए columns minus 1 is the way to go. अब इसको फिर से हम टेस्ट कर लेते हैं. ठीक है, इसमें टेस्टिंग आपको करना पड़ती है बार बार, जस्ट टू सी इफ यू आर मेकिंग थिंग्स प्रॉपर्ली. एरर आ गया, आई कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड. ये जे था, रन करते हैं. तो ये देखें कि अब ये हाइफन्स प्रॉपर्ली इधर आना शुरू हो गए. सही. एंड नाउ we want to put hyphens again in the bottom location. तो bottom location में क्या है कि again we can copy this, put this over here. तो ये जो है ये है, this is a total number of rows, so this is the minus 1 row, so it's rows minus 1. रोज माइनस 1 से हम स्टार्ट करेंगे और इट विल, नहीं रोज से हम स्टार्ट, रोज माइनस 1 से स्टार्ट करेंगे. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. इट इज गोइंग टू पुट hyphens over here, so this should put the hyphens at the proper location. ठीक है, तो हम इसको रन करते हैं. ठीक है, यहाँ hyphen proper location में आ गए. ठीक है, तो this is for so we can always write putting hyphens as walls. ठीक है, ये हमारा काम इसमें हो गया. So we can always copy this, we paste this our own code. अब यही चीज हमें करनी है but for the rows. So I is less than rows
or in this case the column will be 0, I will be 1, and then I will change, ठीक है, और इसमें हम ये इस्तेमाल, so then again this will be columns -1, columns -1 होगा या column, हाँ columns -1, और I j I होगा, and putting or sign, bar कह देते हैं, putting bars as walls, ठीक है, तो ये हो गया, तो if I've done this correctly, ये rows है, ये columns है, rows, हाँ, if I've done this correctly, I will get a proper digit this time. So if we run this, exception आ गई 27, line number 27 की exception आई है, index out of bound, index 7 out of bound for length 6. Okay, so we have to, okay, this will be on the right. Thank you. ऐसा ही है यहाँ पे, हाँ ऐसा ही, ठीक, थैंक यू, तो वी रन दिस, हमारे पास अब प्रॉपर डंजन जो है इसका बॉक्स बन गया, ठीक है, तो बाय फॉलोइंग द सेम कॉन्सेप्ट वी आर एबल टू प्रोड्यूस, ठीक है, अभी सिर्फ हमने टेक्स्ट एरे को यूज करके हमने पूरा पूरा डंजन हमें प्रोड्यूस कर दिया, ठीक, अब होता ये है कि अब आप देखें कि यहाँ पे हमने ये डाला तो आप देखें बहुत खिचपिच हो गई है, ठीक, सबसे पहले तो ये कि हमें अब इसकी जरूरत नहीं है, वी हैव अ वेरी जनरल आइडिया हाउ टू वी कैन मेक आवर डंजन, सो वी डोंट नीड दिस, ठीक है, हमने अपनी इंफॉर्मेशन के लिए हमने रखा था कोड के हम शुरू में रखेंगे और बाद में वो चेंज हो जाएगा, अब ये जो है ये जो कोड है ये हम बाद में हम इसकी जगह ना हम ये आर्ग्यूमेंट्स इस्तेमाल करेंगे, अभी अपनी आसानी के लिए हमने ये रखे हुए हैं, बट वी विल बी यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स लेटर, और यू कैन पुट रैंडम वैल्यूज ओवर हियर, ठीक है, तो वो आप मर्जी है किस तरह करना चाहते हैं, फिर रोज एंड कॉलम्स आपके ज़रूरी हैं, डंजन जो है ये डिफाइन करना ज़रूरी है, ठीक है, तो ये आपके मेन के अंदर होगा डंजन, ठीक है, अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो आप कोड लिख रहे हैं ये काफ़ी खिचपिच कोड है, और इट्स मेकिंग रीडिंग दिस कोड प्रॉब्लमेटिक, ठीक है, और ये एक सेपरेट काम कर रहा है, व्हाट दिस ऑल दिस कोड इज डूइंग, इट्स जनरेटिंग द डंजन, इट्स डूइंग द सेटअप, ठीक, so since it's doing something different, we can always put all of this code in another function. Okay? So अब एक और function हम define करते हैं इसके लिए. So we define public uh, static let's call it void and let's call it setup. ठीक. अब setup जो है हमारा dungeon setup करेगा. ठीक. Maybe somebody has found out like what I'm doing wrong over here, but we will come to that soon. Okay, मैं गलती क्या करूँ? So we take this, all this code, ये code नहीं लेते, we take all of this code, we cut this, and then we put it over here, ठीक, आगे सारा का सारा कोड जो है सेटअप के अंदर डाल दिया, और जहाँ पे आपने सेटअप कॉल करना है, आपने सेटअप करना वहाँ पे सेटअप कॉल करना है, आपका सारा का सारा कोड जो है यहाँ पे आपका रिप्लेस होकर सिंपल एक फंक्शन कॉल हो गई है, दिस मेक्स थिंग्स वेरी वेरी इजी, ठीक, लाइन 22 बता दें, अब वो चेंज मैंने, अब तो मैं भूल गया कि कहाँ से, कोई और लाइन हुई है तब बता दीजिएगा मैं मुझे, ठीक है, सेटअप हमने कॉल कर दिया और हमें देर से पड़ा ये कमेंट, जिसकी वजह से आपका ये डंजन बन जाएगा, जो प्रॉब्लम है वो ये है कि दिस इज अ सेपरेट फंक्शन एंड इट डज नॉट नो व्हाट डंजन इज, ठीक है, डंजन कहीं डिफाइन ही नहीं किया इसके अंदर, तो अगर हम इसको रन करेंगे तो इट विल गिव अस एन एरर, इट विल से दैट आई डू नॉट नो व्हाट डंजन इज, तो हम करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो डंजन हमने लिखा है, ठीक है, वी वांट दिस डंजन टू बी पास्ड ऑन टू दिस सेटअप, ठीक, तो वो करने के लिए आपको पता होगा कि वी जस्ट राइट द नेम ऑफ द फंक्शन, सो
that's the name of the array and that array is passed. ठीक है, और ये it is passed as reference, it's not passed as value. इसका मतलब ये कि इस function के अंदर जो हम changes करेंगे those changes will be applied to this dimension. ठीक, so we set this up and now it's giving us error because setup is not cannot accept anything over here. ठीक है, क्योंकि हमने इधर कुछ पास ही नहीं किया. अब ताकि ये dungeon को accept करे, we define an array of type character. It's a multi-dimensional array, and we name it the same as the dungeon above. ठीक है, तो ये जो dungeon है is we are giving it a reference and we keeping it the same as this name. ठीक है, ताकि हम confuse ना करेंगे ये array कौन सा आ गया. ठीक, तो उससे ही क्या होगा कि ये आपके पास you will write setup और आपके पास जो dungeon है वो आपका create हो जाएगा. ठीक है, automatically. Now since this is being passed as reference, so you don't have to return anything. All the values are going to be allocated automatically. Similarly, आप हर बार whenever you want to see the dungeon, you have to call these for loops repeatedly. ठीक है, we don't want to do that. What we want to do is we just want to call a function which does this job for us. तो इसका मतलब ये है कि हमें rows चाहिए, हमें columns चाहिए और हमें dungeon चाहिए. ठीक है, that is what we require. तो हम फिर से एक और function define करते हैं, public static void, let's call it show. मैं जिस तरह को बताया था, it will require it will require int rows, it will require int columns, and it will require character dungeon. ठीक है, तो जब भी हम इस फंक्शन कॉल करेंगे it will create the dungeon for us, it will show us the dungeon. तो इसका मतलब है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है. We just cut this out, we put this over here, and whenever we want to see the dungeon we just call show, and we can write in rows and columns and the dungeon. ठीक है, तो अब मुझे कभी भी, अब देखिए आपका जो मेन है वो कितना हमारा कितना वो मैनेजेबल हो गया. ठीक है, मेन इज लुक्स वेरी नीट एंड क्लीन राइट नाउ. ठीक है, क्योंकि हमने जो घिचपिच थी वो हमने ऊपर दूसरे फंक्शन में डाल दी. Sir, can you put in a function as an argument in another function? No, you cannot. ठीक है, there is a thing called function pointer, but that goes beyond the scope. ठीक है, उसके जरिए से आप कर सकते हैं, लेकिन not here. How do we know if something is being passed as reference or something? वो ये मैं क्लास से कई दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, अभी बताऊंगा आपको. ठीक है, हमने उसकी वैल्यू नहीं पास की, बस नाम पास किया है, so that's a reference. ठीक है, आपके पास मैं आपको बताया था कि आगे जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ठीक है, जो लिटरल्स हैं, ठीक है, दे विल ऑलवेज पास बाय वैल्यू which is happens over here. तो ये इससे वैल्यू पास हो रही है. लेकिन जो एरे है इट विल ऑलवेज पास एज रेफरेंस, क्योंकि एरे का साइज बहुत बड़ा हो सकता है. इफ इट इज अ मिलियन वैल्यूज, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको पास बाय वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको एरे की कॉपी बनानी पड़ेगी. जब भी आप कॉपी बनाएंगे मतलब ये है कि आप एक्स्ट्रा मेमोरी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अंदर आप काम कर रहे हैं. ठीक है, सो नॉर्मली व्हेन यू आर पासिंग समथिंग एज एन एरे इट इज ऑलवेज पास्ड एज अ रेफरेंस. अब ये हमने इधर वो क्यों नहीं लिखा कि हमने इधर 0 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर हम 0 0 लिखेंगे सो वी विल देन बी पासिंग द इंडेक्स 0 0. ठीक है, तो डंजन का पूरा जो एरे है उसके अंदर हम 0 0 इंडेक्स पास कर रहे होंगे, जो कि ये गलत कर देगा. अगर आप कह देंगे कि नहीं अच्छा मैं इसे रोज कॉलम कर देता हूँ, रोज और कॉलम्स, then we will be passing the index rows and columns. तो यही आगे पास लिखेंगे, अगर आपका था 6 8 था तो you will be passing dungeon 6 8. तो 6 8 पे जो वैल्यू पड़ी होगी ये वो पास कर देगा. ठीक है, जो इस केस में कोई भी नहीं होगी, क्योंकि that goes beyond the length of the array.
तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इन्होंने आसान काम ये किया, यू जस्ट राइट द नेम ऑफ द एरे। सो वंस यू राइट द नेम ऑफ द एरे इट मीन्स द एंटायर एरे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो वो है वो एज रेफरेंस पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा आपका पास हो जाएगा। सो वी हैव शो नाउ इफ वी रन दिस सो वी शुड गेट द सेम रिजल्ट। क्या गलती हो गई, रोज कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल। 5 और 39, 5 किधर है, टेक्स्ट इंजन 39 पे देखते हैं, 39 पे सेटअप इंजन क्या हुआ, मेरा सेव करना पड़ेगा मे बी देन। रोज कैन नॉट बी, जी जी ये सेटअप के अंदर आपने रोज और कॉलम पास किए, वो भी करने पड़ेंगे, यूज हो रहे थे सेटअप सेटअप। में किए हुए, मैंने सेटअप में तो नहीं किया, मैं सिर्फ इंजन। ओके ओके ओके, सही है, यू आर राइट, सेटअप में भी करना है। ठीक है, तो वी हैव टू, यू आर राइट, int rows int, there are ways of doing this। ठीक है, so we pass rows and columns here, we pass rows and columns here, rows, columns। What I was planning on doing was using dungeon dot length and dungeon zero dot length, तो लेकिन I think this is fine this way। हमने ये पास कर दिया और हमारे पास rows और column। so if we did it correctly which we have, I think नहीं, हमारे पास वही प्रोड्यूस हो गया, वी डोंट गेट एनी एरर। ठीक है, तो आपने जो घिचपिच थी वो दूर कर दी है और यू आर गेटिंग द dungeon itself। अब ये करने के बाद हमारा जो पॉइंट था वो ये था कि ओके वी हैव टू स्टार्ट, वी हैव टू राइट द प्लेस द p एंड वी हैव टू प्लेस द x। ठीक है, ताकि हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता चले और हमें एंडिंग पॉइंट पता चले। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये जब हम करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक, so that is to the extent we will be able to do it। तो अब चूंकि हमने ये प्लेस करना है, so we have to place them in the setup। ठीक है, अब सेटअप के अंदर करेंगे, तो यहाँ पे आप पहले लिखते हैं प्लेसिंग प्लेयर। ठीक है, ये देखें कमेंट्स लिखने का फायदा होता है जिसके जिससे हमें पता चले। अभी प्लेसिंग प्लेयर कहाँ, टू द लेफ्ट एज ऑफ द डंजन। तो ये अब हम बता रहे हैं कि हम ये जो काम कर रहे हैं तो ये हम डंजन की लेफ्ट एज पे करेंगे। ठीक है, तो जो प्लेयर है वो हमेशा, और प्लेसिंग प्लेयर प्लेयर p to the left edge of the dungeon। तो ये करने के लिए हम फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। वी कैन जस्ट टेक दिस, माउस बहुत तंग कर रहा है, तो सो फॉर i इज इक्वल टू, ये कॉलम्स के लिए करता है, हाँ, फॉर i इज इक्वल टू 0, हमारा ये काम नहीं करेगा, कहेंगे दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। फॉर लूप तो हमारा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने क्यों कॉपी कर लिया। हमें करना ये है कि वी हैव अ रैंडम लोकेशन n is equal to a math, sorry, let's call it int ran is equal to math dot random, or it should place it in a location which will start from 1 and go all the way to not n, not not rows, not even rows minus 1, but rows minus 2 and rows minus 2। ठीक है, इसको ब्रैकेट्स में कर दें।
And now since this is a double value, so we have to convert that into integer. So we write it as integer. लेकिन we have to include one. और ये आपको वैल्यू जो है 0 से लेके तक देती है, ठीक है, तो हमें we need to add a 1 over here. 1 plus. ठीक. अभी क्या करा कि रोज आपके पास इन दिस केस इज 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 रोज हैं आपकी. तो अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, तो 1 प्लस करेंगे तो हमेशा 1 तो होगा. तो अगर दिस कम्स आउट टू बी, दिस रैंडम वैल्यू कम्स आउट टू बी क्लोज टू 0, ठीक, तो ये 1 प्लस 0 हो जाएगा. तो देन दिस इज द लोकेशन वी विल गेट 1. Now, if this location comes out to be, in this case, is 5, ठीक, तो अगर हम यहाँ पे 5 लिखेंगे तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा. तो इट विल लाई इन दिस लोकेशन, ठीक है. तो हम 5 नहीं रख सकते, वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विथ 4. तभी हमने जो नंबर ऑफ रोज है, सिंस दे आर 6, वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विथ 4. सो दैट्स व्हाई वी हैव डन रोज माइनस 2 इंस्टेड ऑफ रोज माइनस 1. अब ये करने के बाद हमारे पास जो रैंडम लोकेशन आएगी, तो वी हैव टू प्लेस दैट रैंडम लोकेशन. सो हम लिखेंगे कि डिंजन डिंजन the column location is 1 and the row location is any one. So in this case it's ran, and we put p there. I think I've done the correct math. तो इससे हमारे सर पास जी क्या आपने रोज -2 से क्यों मल्टीप्लाई किए? रोज -2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि आप रोज -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्ज करें कि आपके पास रोज जो है इन दिस के साथ 6. तो मैं अगर रोज -1 से करूंगा तो दिस विल बी 5, ठीक. oh yes I forgot 5 is not included. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो 5 is not included, so it should be rows -1. ठीक है, सही है. So now if I have done this correctly, तो ये होगा, ठीक है, क्योंकि वो जीरो से जो आगे पास वैल्यू होती है डजंट इंक्लूड द लास्ट वैल्यू. सो इन दिस केस दैट वैल्यू नीड्स टू बी 5. इसका मतलब ये है कि आपको मैक्सिमम 4 तक ये वैल्यू देगा, एंड 4 + 1 विल गिव यू 5. तो आपका ये रो आ जाएगी. So if we have done this correctly, we should get a P over there. We run this. P आया, फिर से run this. Oh, ये गलती हो गई. I guess I was right then. Okay. So rows -2. It seemed like you guys were right, but अब करें, 2-3 बार रन करके देखें तो आपके पास देखिए अब रैंडम वैल्यूज आ रही हैं. इट्स गिविंग यू द पी एट द करेक्ट लोकेशन, ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि आप बार-बार इसको टेस्ट करके देखें कि इफ यू आर गेटिंग इट एट द करेक्ट, ठीक है. तो इसने पी यहाँ पे डाल दिया. अब फाइनली जो फाइनल चीज है वो ये है कि सो यू नो लाइक द वे वी हैव पुट डाउन पी वी कैन पुट द सेम वे ई ओवर हियर ऑन दिस लोकेशन. अब बाकी मर्जी है कि आप ये भी कर सकते हैं कि यस नहीं, आपका 4 है ना. देखें यहाँ पे आपका कहाँ गया, यहाँ पे आपका 4 है. इसका मतलब ये है कि जो रैंडम नंबर है 0 से 3 तक आपको मिलेगा. और आपके फर्स्ट में आपके पास 3 आ जाता है, तो 3 + 1 4 आ जाता है. तो ये जो है दिस इज 1 2 3 4. तो ये सारा अलाइ करेगा, ठीक है. तो इस वजह से ये 5 वैल्यूज नहीं है, 6 वैल्यूज होंगी ना. नहीं सॉरी, 4 वैल्यूज होंगी, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 which is this, and we can maximum go to, we can maximum add 3 to this one value, ठीक है. तो 1 2 3, तो यहाँ तक आपका रुक जाएगा. तो आपको इसको मल्टीप्लाई जो है 4 से करना होगा. so that's why we have done rows -2. तो
आई वॉज ऑन द राइट ट्रैक। ओके, अब जो ई है वो भी आप एग्जैक्टली इसी तरह डाल सकते हैं। जो जो इसे अब जो इशू है, फाइनल इशू, ठीक है, वो ये है कि हमने पी तो लिख दिया, लेकिन वी डू नॉट नो लाइक वेयर द पी लाइज, ठीक है, पी पड़ा कहाँ हुआ है। तो एक तो तरीका ये है कि जो आपकी डंजन की वैल्यू है सेटअप में, जो आपकी ये जो वैल्यू है, आप इस वैल्यू को आप सेव कर लें, ठीक। कहीं पे तो आपको रैन सेव करना पड़ेगा, आपको वन सेव करना पड़ेगा, और हर बार आपको रैन और वन को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप पी की क्लास बना लें, ठीक है, और उसके अंदर ये वैल्यूज डाल दें, ठीक है। तो वेरी क्विकली वी डू दैट। फाइल, I create a new file, let's call it let's file save as uh, player.java, save this as Java, save this, and over here we write public integer x and public integer y, ठीक। हमने ये इसके जो x और y उनको हमने पब्लिक कर दिया, इसको सेव कर लें। और डंजन में आके हम क्या करते हैं कि पहले हम प्लेयर को डिफाइन कर देते हैं। प्लेयर प्लेयर इज इक्वल टू न्यू प्लेयर, ठीक है। अब चूंकि ये हमने डिफॉल्ट, हमने इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, प्लेयर कंस्ट्रक्टर बनाया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो एक्स और वाई की वैल्यू बाय डिफॉल्ट जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब चूंकि सेटअप में हम प्लेयर को पास कर रहे हैं, प्लेयर प्लेयर सेटअप को नहीं पता प्लेयर क्या है, तो उसको प्लेयर को पास करना पड़ेगा, सो वी विल पास प्लेयर हियर, ठीक। अब प्लेयर जो है वो हमने इधर पास कर दिया, लेकिन सेटअप को नहीं पता कि हम प्लेयर पास करें, तो वी विल हैव टू राइट प्लेयर ओवर हियर, प्लेयर, ठीक है। और ये भी याद रखें कि जो जो आपका क्लास होती है दैट इज आल्सो पास बाय रेफरेंस ऑल द टाइम, क्योंकि क्लास के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो हमेशा अगर आप पास करेंगे उसकी कॉपी बनी, तो दैट इज गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम, सो यू विल गेट द मल्टीपल वेरिएबल्स ओवर हियर, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यू पास इट बाय रेफरेंस। और जहाँ पे आगे पास ये रोज और कॉलम हुए पास, ठीक है, तो जो कि आपके यहाँ पे हो रहे थे, ठीक है, तो आप करेंगे प्लेयर डॉट एक्स इज इक्वल टू लेंथ and player dot y is equal to 1, ठीक है। तो प्लेयर की एक्स और वाई जो जगह है उधर हमने इसकी जो है लोकेशन हमने प्लेस कर दी। अब सेटअप क्या कर रहा है कि सेटअप इट्स नॉट ओनली setting up the dungeons, it's also setting up the player के कि प्लेयर जो है उसको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स किया है, ठीक है। तो हमने ये इसलिए प्लेयर का हमने क्लास बना दिया। अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि फर्स्ट कहें कि हम प्लेयर की हेल्थ बनाना चाहते हैं कि द प्लेयर हैज अ सर्टेन हेल्थ, ठीक है। तो हम सिंपली इसके अंदर जाएंगे, वी कैन ऑलवेज राइट पब्लिक इंट हेल्थ, ठीक है। फिर आप कहते हैं प्लेयर का कुछ आर्मर है, यू कैन ऑलवेज राइट पब्लिक इंट आर्मर, ठीक है। फिर अब होता ही है कि जो प्लेयर है इट्स कैरिंग अ वेपन एंड द वेपन हैज डैमेज, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वी हैव टू क्रिएट अ क्लास ऑफ वेपन, वेपन इज वेपन वेपन, और वो वेपन हम जो इसको असाइन करेंगे प्लेयर को, तो दैट वेपन विल हैव अ सर्टेन डैमेज। तो अब हमारी जो वेपन है उसकी क्लास होगी, उसके अंदर हमें डैमेज डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह आर्मर की अभी मैं समझती है इसको एक नंबर दे दिया, लेकिन आर्मर की अपनी क्लास हो सकती है, उसका अपना डैमेज और डैमेज रेजिस्टेंस उसकी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आर्मर में होता है कि फायर रेजिस्टेंस है, कोल्ड रेजिस्टेंस है, वो आप इसके अंदर डाल सकते हो। यू कैन सी लाइक हाउ दिस कैन एक्सपैंड, ठीक है। करिश्मा, हाँ, आप करिश्मा कोई डालना चाहता है तो उसको आप डाल दें करिश्मा, ठीक है। तो ये प्लेयर की एबिलिटी है, ठीक। तो तो ये सब चीज़ें इसमें देखें, आप डाल के ना प्लेयर की जो क्लास है इसको आप ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना उसके अंदर इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं। आप जैसे सिर्फ हेल्थ पे रखेंगे तो इट विल बी अ वेरी बेसिक गेम। आप जिस तरह ये बाकी एट्रीब्यूट्स डालते रहें, एजिलिटी वगैरह डालना शुरू हो जाएंगे, तो दिस विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो आप वो सब चीज़ें डाल सकते हैं, बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल रिमेन इनसाइड द प्लेयर, ठीक है। तो so those will not change. अब अगेन
हेल्थ जो है उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज हेल्थ कैन नॉट गो बियॉन्ड जीरो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप उसको पब्लिक एक्सेस नहीं दे सकते। यू विल हैव टू क्रिएट अ फंक्शन विच विल कंट्रोल हाउ द हेल्थ वर्क्स। ठीक है, तो इसलिए हम क्लासेस बनाते हैं कि आपकी जो क्लास है दैट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन विच परटेन्स टू अ सर्टेन एलिमेंट विद इन योर गेम। ठीक है, तो अब इस ये करने से अब हमारे पास प्लेयर की लोकेशन आ गई, हमने रोज डाली, हमने कॉलम्स डाल दिए। अब बाकी चीज़ें भी हमने नहीं डाली हैं, जो कि आपके पास वॉल्स थी कि मल्टीपल वॉल्स कैसे डाल सकते हैं। अब अगर हमने वॉल्स डालनी है तो आप रैंडमली आप कह सकते हैं कि वेन एवर इट ट्रेवर्सेस द रो, ठीक है, तो रैंडमली कहीं पे भी वो एक प्लस को प्लेस कर दें। ठीक है, तो इस तरह करके आप डाल सकते हैं, और ये भी डाल सकते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्लस को प्लेस करेगा। तो इस बेसिस पे आप सारे प्लस डाल सकते हैं। द सेम एल्गोरिथम कैन वर्क फॉर फूड एंड एनिमीज एंड वेपन्स। ठीक है, तो वो सारा एल्गोरिथम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका ये पूरा का पूरा आपका यू विल बी मेकिंग अ डंजन। ठीक है, और यू विल एक्सपैंड अ डंजन बेस्ड ऑन दैट। और जब वो पूरा हो जाएगा तो फिर आपको फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि हाउ विल द प्लेयर मूव। ये प्लेयर मूव कैसे करेगा, विल द यूजर चूज हाउ टू मूव और विल इट मूव ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये अब आगे पर डिफाइन डिपेंड करता है, आपके समझ आ जाता है। लेकिन अभी तक के लिए ये है कि हमारा जो कोड लिखा है उसमें अब मैं कुछ छोटी सी चेंजेस करूंगा। सपोज आई वांट टू मेक अस वी वांट टू हैव 7 rows but 18 columns. So if I want to make something like this, so this should work. ठीक है ना, ये देखें 7 rows और 18 columns हमारे, this has work। ठीक है, तो rows को मैं 5 करूँ, 5 और 28, ये 5 हो गया, और ये 28 कर देंगे। Now if I run this, it will work again। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं कि आपने चूंकि एक दफ़ा एल्गोरिदम अच्छा बना लिया है, तो आप इधर से सिर्फ 2-3 चीज़ें आप चेंज करते हैं और यहाँ पे पूरा पूरा जो डेंजन है वो चेंज हो जाता है। सो यू कैन मेक मल्टीपल रूम्स लाइक दिस। ओके, तो जब भी आप इसमें ट्रैवर्स करते रहे, सपोज यू रीच एन एग्जिट, यू गो टू द नेक्स्ट रूम। ठीक, तो यू कैन मेक मल्टीपल रूम्स लाइक दिस और अपना पूरा एक पूरा डेंजन आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हर रूम में कोई ना कोई चीज़ हो रही होगी। तो दिस इज द वेरी basic construction of a dungeon when you are working with the text based गेम। अगर टेक्स्ट बेस्ड गेम आना चाहता है इस तरह बड़ा सिंपली आप एक पूरे पूरे डिजाइन बना के उसमें चल सकते हैं। ठीक है, तो जो इस ट्यूटोरियल का जो मकसद था वो ये था कि यू फाइंड आउट how you can manipulate the character arrays, how you can pass values, how you can pass elements as values, how you can pass references। ठीक है, और आप क्लासेस कहाँ पे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद अगर आप ये देखें तो आपका मेन जो फंक्शन है कितना सिंपल और एलिगेंट है। इट्स वेरी स्मॉल बिकॉज वी हैव फंक्शंस which have the information, we have the player class which has the information। ठीक है, तो आपने अपना कोड मेन का इस तरह साफ सुथरा रखना होता है। सेटअप डज इट्स ओन पार्ट, शो डज इट्स ओन पार्ट। ठीक, तो इस तरह आपने अपना जो है गेम को चलाना होता है। नाउ इफ यू बिल्ड ऑन दिस यू कैन बिल्ड एन एंटायर गेम इफ यू वांट टू। ठीक है, मैंने आपको बेसिक्स बता दिए, नहीं हैकर रैंक पे क्विज नहीं है। सो we can build an entire game out of it if you want to, so you can take over from here and complete the game if you want। So that was it for today. I hope it was interesting, uh, and I hope you learned the array manipulation and function manipulation। ठीक है, so that's about it। तो अब टाइम खत्म हो गया। If you have any questions, or maybe in the next lecture we can take this further if you want to। ये तो हम मजीद इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो उसमें क्लासेस भी आप ही काफ़ी रिवाइज हो जाएंगे। और सर क्विज 10 बजे है ना? जी 10 बजे LMS पे ही है ना? LMS पे ही है। ओके सर, हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर जी सर
तो इसमें टीए ने हमें बताया था कि हमें जो है वो जिप फाइल बनानी पड़ेगी, उसमें हमें अपना कोड और सोर्स फाइल डालनी होगी और फिर वही हमें मतलब सबमिट करना होगा। तो मुझे ये पूछना था कि हम लोग फाइल हैंडलिंग वाले क्वेश्चन में सिर्फ फाइल नेम मतलब पास करेंगे या पूरा पाथ पास करेंगे? आप सिर्फ फाइल नेम रखेंगे क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो टेक्स्ट फाइल है वो उसी डायरेक्टरी में पड़ी है जिस डायरेक्टरी में आपकी सोर्स फाइल है, तो इसलिए आपको पाथ देने की जरूरत है, सिर्फ फाइल नेम से काम चल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ये ग्रेप क्या? गुड क्लास ग्रेप, अच्छा, वट एवर दैट इज। सर जी जी सर जी, मुझे लास्ट क्विज जो हुआ था ना उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था। पूछिए। सर उसमें जो है वो उसमें क्विज में ये था कि जैसे ही यूज़र जो है वो टाइपिंग स्टार्ट करे ना, तो जैसे ही वो एंटर प्रेस करे ना तो फिर जो है वो फाइल क्रिएट हो जाए। तो सर ये कैसे होगा, क्योंकि मैंने उसके लिए काफ़ी चीज़ें करके रखी हैं। जैसे मैंने इसका ये बनाया था कि एंटर जब वो करेगा तो न्यू लाइन पे आ जाएगा कर्सर। तो मैंने उसकी कंडीशन रखी थी, लेकिन सर उससे हो नहीं रहा था, तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि आप उसका जो एंटर ये बेसिकली स्लैश एन होता है, ठीक है, तो आप जो टेक्स्ट एंट्री है उसके अंदर वो आप नोट करेंगे कि स्लैश एन कहाँ पे आए, जैसे स्लैश एन आएगा तो वो उसको डिटेक्ट करेगा, उसकी बेसिस पे वो फाइल को क्रिएट कर देगा। अच्छा सर, ठीक है, थैंक यू। ट्यूजडे लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है लेकिन मैंने उसको वो नहीं किया, आपको लिंक नहीं दिया, तो I'll give you the link soon. Okay, so okay, the time is almost up. So well, it is up, but you should be getting ready for the quiz. So see you next week.